Good morning, students. So, in the last lecture of this particular chapter, that is current, electricity, and magnetism, we have seen the types of cells. Okay, so we have seen what is dry cell, electric cells. Okay, we have seen lead acid cell. Okay, which is made up of lead dioxide and lead terminals, and those are inserted in a H2SO4. So H2SO4 is sulfuric acid. Okay, then we have seen nickel cadmium cell, and we have seen what is an electric circuit. Now we are going to discuss connecting cells. So what is connecting cells? It is not a type of cell, just a lot of cells are connected to each other, increasing which results in the increase of magnitude of the electric current. Okay, so there are several cells which are connected to each other, and the power of the cell increases due to that connection. Okay, so now connecting cells, you must have seen more than one electric cells connected in an electrical circuit. Okay, so whenever we see a circuit, in that circuit you will find that a lot of cells are connected. So for example, this is a circuit, so you will find that two or more cells are connected to this circuit. Okay, now what happens once we connect all these cells together? Okay, it may increase the current or it may reduce the potential difference. So we will see the effect of this increment, this connection of between the cells. In the transistor radio, 2 to 3 dry cells are seen to be connected in series. ओके, हमारा जो रेडियो होता है ट्रांजिस्टर रेडियो, उसमें दो और दो से ज़्यादा जो ड्राई सेल्स होते हैं उसे कनेक्ट किया जाता है सीरीज में. ओके, सो वी कैन कनेक्ट दिस सेल्स इन अ सीरीज और in parallel connection. Okay, so the cells can be connected in series or in parallel. Okay, the purpose of doing this is to obtain more potential difference than that of a single cell. Okay, so जो सिंगल सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं कि दो और दो से ज़्यादा सेल्स क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से. इससे क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज हो जाता है. ओके, जैसे कि अगर आप लोग किसी चीज को तोड़ना चाहते हो, किसी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो दो या दो से ज्यादा अगर लोग फोर्स लगाएंगे, अगर गाड़ी को धक्का दिया जा रहा है तो एक आदमी के धक्के से गाड़ी ज्यादा दूर जाती नहीं है. दो से ज्यादा बहुत सारे लोग जब धक्का लगाते हैं तो गाड़ी क्या होती है, आगे तरफ आगे जा सकती है, आगे ढकली जा सकती है. इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने फोर्स को बढ़ाने के लिए दो तीन लोगों को इकट्ठा किया. वैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने के लिए दो या दो से ज्यादा ड्राई सेल्स को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है. ओके, if the cells are connected as seen in the figure 4.5b. ओके, यहाँ पे ये जो फिगर है 4. ये वाले फिगर में आप लोग देखेंगे तो जो सेल्स कनेक्टेड है वो क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है. सो दिस सेल्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज. ओके, so positive terminal is connected to a positive terminal and negative terminal is connected to a negative terminal. Okay, positive to negative and negative, this is the connection. In this way if the connection is there, then such connection is called as series connection. Okay, whereas in parallel connection you will see positive negative positive negative positive negative and so on. Okay, so this type of connection is a parallel connection. Okay, whereas the connection wherein the cells are arranged in a series, that connection is called as series connection. Okay, now if the cells are connected in series, the connection of cell is known as battery of cells. Sorry, if the cells are connected in parallel, if the cells are connected in a parallel way, okay, then that is going to be called as battery of cells. In this series connection, the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of second cell.
Okay, in series connection, the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of another cell. Okay, so एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये किस टाइप का कनेक्शन हो जाएगा? सीरीज कनेक्शन हो जाएगा. ओके, therefore if each cell has a potential difference of 1 volt, the total potential difference of three cells will be 3 volt. देखो सीरीज कनेक्शन में अगर तीन सेल्स लगाए हुए हैं, ओके, और एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है, तो तीनों सेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस मिला के क्या हो जाएगा? 3 वोल्ट हो जाएगा. इसका मतलब हम लोग जब सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है हमारा? इंक्रीज हो रहा है. पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है हमारा? इंक्रीज हो रहा है. ओके, so this is about the connection of cells. Okay, so cells are connected to each other to increase the potential difference. Now we must know that lithium ion cells, okay, this is again a type of cell which is used in modern equipments, for example smartphone, laptops, etc., etc. So the modern equipments that we use, the major equipment that we use is smartphone. Okay, so in this smartphone, lithium ion cell is installed. Okay, these cells can be recharged. More electrical energy can be stored in these cells as compared to that in the nickel cadmium cells. देखो लिथियम आयन सेल में निकल कैडमियम सेल से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है? स्टोर हो सकती है. ओके, लिथियम आयन सेल में निकल कैडमियम सेल से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो सकती है. Now we are going to discuss the magnetic effects of electric current. So what is magnetic effect of electric current? Whenever electrical current passes through any conductor, it is going to generate a magnetism, okay, a magnetic effect around the conductor. जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, तब वो कंडक्टर क्या करता है? अपने अराउंड, मतलब उस पर्टिकुलर कंडक्टर के आसपास आपको मैग्नेटिज्म देखने मिलेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट देखने मिलेगा. ओके, टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक अ बेयर वायर एक हम लोग वायर ले सकते हैं जिसके ऊपर कोटिंग नहीं होगी, और उससे अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और उसके बाजू में अगर कंपास लेके जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? कंपास. तो कंपास में आपको डिफ्लेक्शन देखने मिलेगा. क्या देखने मिलेगा? डिफ्लेक्शन देखने मिलेगा. इससे हमें क्या समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर वायर में जो करंट पास हो रही है वो अपने आसपास क्या क्रिएट कर रही है? मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर रही है. ओके, so the magnetism which is produced with the flow of electrons in any conductor, that is called as magnetic effect of electric current. It is called as magnetic effect of electric current. So you know that magnetic needle is indeed a magnet. You have seen that the magnetic needle changes its direction when a bar magnet is taken near the magnetic needle. Also, you have observed that the magnetic needle changes its direction when a current starts flowing in the circuit. This means that the magnetic field is created when an electric current flows in a wire. Okay, from the above experiment, what we can understand that magnetic field is created when an electric current flows in a wire. Okay, so अगर किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो अपने आसपास क्या क्रिएट करती है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है. क्या क्रिएट करती है? मैग्नेटिक फील्ड. So there was a scientist known as Hans Christian Ørsted. So what is the name? Hans Christian Ørsted made this observation first. So he was the first to discover that magnetism is produced or magnetic field is produced when an electric current passes through a conductor. Briefly, we can say that when an electric current passes through a wire, magnetic field is produced around that wire. Okay. Now there is one more activity that we can perform. We have to take an iron nail. Okay. We can place a wire and we can provide a potential difference. That is, we will connect the cell to that wire. Okay.
And we can observe that a small pen is going to attached or attracted towards this particular needle when we take it towards the needle. ये जो पिन है, आयन पेन या फिर आयन नेल छोटा सा, वो क्या होगा, इस पर्टिकुलर नेल को, खीले को क्या होगा, जाकर के स्टिक करने वाला है, चिपकने वाला है। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जब इस पर्टिकुलर आयन नेल से पास होगी तो वो उसके आसपास मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। सो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द वायर, मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल अराउंड द स्क्रू, एंड बिकॉज ऑफ दैट द स्क्रू आल्सो कंटेन्स मैग्नेटिज्म। इस वजह से क्या होता है कि ये स्क्रू है उसमें आपको मैग्नेटिज्म देखने मिलेगा। As soon as the current is stopped, this magnetism vanishes. जैसे ही हम लोगों ने करंट को स्टॉप कर दिया, ये जो मैग्नेटिज्म है इस पर्टिकुलर स्क्रू में वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। ओके, so this system of coil and the screw is called an electromagnet. जो सिस्टम है कॉइल और स्क्रू का, उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। You have seen various uses of the electromagnet in the sixth standard. Okay, so in the sixth standard, we have studied about the uses of electromagnet. Electromagnets are used to produce strong magnetic field useful in scientific research. Okay, so this electromagnetism is a very important concept in terms of research. Okay, now we will see one of the application of this particular electricity and magnetism, that is electric bell. Okay, so many of you must have seen the simple electric doorbell. हमारे सबके घर में एक डोरबेल होता है। Okay, open such a bell which is out of order. एक आप लोग ऐसा कोई सा ये बेल देख सकते हैं जो काम फिलहाल यूज में नहीं है, तो आप उसमें ऑब्जर्व करोगे, क्या क्या ऑब्जर्व करोगे आप लोग, कि एक बेल तो होता है और एक स्ट्राइकर होगा जो इस पर्टिकुलर बेल के ऊपर स्ट्राइक करेगा एंड वॉइस विल प्रोड्यूस्ड। ओके, लेकिन उसी के साथ साथ आप लोग जब उसे डिसमेंटल करोगे या फिर ओपन करोगे उस पर्टिकुलर बेल को, तो आप लोग देखोगे कि वहां पर एक आयन स्ट्रिप है, एक कॉन्टैक्ट स्क्रू आपको देखने मिलेगा, और उस स्क्रू के ऊपर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कॉइलिंग्स देखने मिलेगी वायर की। ओके, एक हमारा स्विच होता है, अगर हम लोग ने स्विच को क्लिक किए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल करंट पास होगा कॉइल से और फिर आपको मैग्नेटिक इफेक्ट दिखने मिलता है। ओके, और यहाँ पे आपको पावर सोर्स दैट इज सेल लगाया हुआ है। नाउ we see that there is an electromagnet inside. Okay, so inside a bell an electromagnetic is used, an iron strip along with the striker is fitted near to the electromagnet. So here an iron strip, a strip which is made up of iron. Okay, the spelling here is wrong, it must be IRON. Okay, so iron strip is used. Okay, let us understand the working of the bell. So we will see how this bell works. A copper wire is wound around an iron piece. This coil acts as an electromagnet. So here you can see there is a coiling of copper wire which is going to act as an electromagnet. Okay. The contact screw is in touch with the strip. The electrical circuit is connected as shown in the figure 4.8. So this is the connection of this particular circuit. The current flows in the circuit when screw is in contact with the strip. Okay, so when this particular screw is going to be in contact, will be in contact with this particular strip. Okay, the current flows in the circuit when the screw is in contact. So if this screw is in contact with the with the strip, okay, then what will happen, current is going to flow. Okay, therefore the striker hits the gong and the sound is created. This is called as gong. Okay, however at the same time the contact screw loses the contact with the strip and the current in the circuit stops. लेकिन जैसे ही ये आपको आयन स्ट्रिप जो है
वो इसको स्ट्राइक करेगा, ओके, गोंग को। आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, जो स्क्रू और स्ट्रिप का कांटेक्ट है, स्क्रू और स्ट्रिप का जो कांटेक्ट है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ओके। और सर्किट में से करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा। In this situation, the electromagnet loses its magnetism and the ion strip moves back and comes in contact with the contact screw. The electric current is then immediately restored and again the striker hits the gong by the above process. This action repeats itself and the bell rings. होता क्या है कि जब हम लोग की को प्लग करेंगे, मतलब की को ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा इस पर्टिकुलर कंडक्टर से और यहाँ पे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जो आयन स्ट्रिप है वो गोंग की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ओके, मतलब गोंग की तरफ जाएगा और बेल रिंग होने वाला है, ओके। और कॉन्टैक्ट स्क्रू होता है, कॉन्टैक्ट स्क्रू जो है वो आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेट से दूर हो जाता है, मतलब स्क्रू से दूर हो जाता है। स्ट्रिप जो है वो सेपरेट होगा और फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही थी वो स्टॉप हो जाएगी, ओके। सो in this lesson we have seen the magnetic effect of electric current connecting cells, and we have also discussed about the application of electromagnet which is used in electric doorbell, okay. Now your homework will be, you have to solve the practice set, or sorry, solve this exercise, okay. So your homework is you have to solve the exercise. In the next lecture we will start our new chapter, okay. Thank you.